गेमर की फैमिली, आप सबका एक न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम खेलने वाले Assassin's Creed पार्ट 2। तो पिछले एपिसोड का अगर आपने नहीं देखे तो उसको देखो, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो पिछली बार में एडवर्ड केनवे जो है ना वो एक पायरेट था, फिर वो असैसिन को मार के असैसिन बन गया, और अब अपने रिवार्ड कलेक्ट करने के लिए रवाना आ गया है जो मिस्टर वॉल्पन से मिलने के लिए। तो आगे क्या होते हैं, तो चलो शुरू करते हैं गेम को। स्क्रीन लोडिंग हो रहा है तो इंतज़ार करना होगा। चलो एक मिनट, मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ ताकि जितने मैप्स है और सब कुछ आ जाए इसमें, फिर गेम थोड़ा आसान हो जाते हैं हमारे लिए। आगे चलो मेन मिशन की तरफ जाते हैं। तो मुझे इसको तो पकड़ लिया। उधर स्कार्ट जो है ना वो गड़े, तो इसलिए मुझे इस रास्ते पे जाना, क्योंकि फिर वो लोग मुझ पे अटैक कर लेंगे, तो इसलिए तो मुझे इस रास्ते पे जाना होगा। ऊपर हम बस पहुंचने वाले। मेरा दोस्त इधर, चलो उसके पास जाते। ये स्टीव इन माय शुगर मिशन का नाम है, इन माय शुगर। Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar to when your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is muy mal dad, so I'd rather not ask. Shit! Alright, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. तो चलो, तो मुझे अब इसको पीछे करना होगा, क्योंकि इसने चाबी बटन से दबाने से ईगल विजन आता है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या। So while using eagle vision you can take up 10 enemies or animal by just looking how you take it। समझ में आ गया। तो मुझे इसको पीछे करना। Keep quiet and stay out of sight. येलो कलर का है, मतलब इसको मुझे नहीं मारना होगा, जब इसको फॉलो करना होगा। Bonnet! Tell the guards। I believe I'm getting the hang of this. Quiet! I fear they're onto us. Hang back. भाई पीछे देख रहा है, तो इसे मुझे इन लोगों के साथ खड़ा होना होगा। Join the... Buenos dias, senores. You're late. Yes, sir. See, we are very sorry. Our captain delayed us. अगर ये इन लोगों को पता चले कि मुझे फॉलो कर तो मिशन फेल हो जाएगा, तो मुझे इन लोगों को चुपके से फॉलो करना। This would be Captain Mendoza? Yes, sir. He's very excited to meet you. Only he must be present for a hanging, senor. Hanging? Oh, I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go, if you like. ओ भाई बहुत खतरनाक जगह पर निकला। ओ भाई देख, भाग जाओ। Especially if Captain Mendoza's with Shit यार। Man owes me money for the slaves I sold him. चलो अब ठीक है, मुझे इन लोगों की बातें भी सुननी होगी, क्योंकि क्या बोल रहे हैं तो Of course, sir.
Captain Mendoza is happy to pay you. We have goods to sell, sugars and such. Excellent. No te lo repito más. Último aviso, cretino. Último aviso o acabas en un ataúd. No te lo repito más. A algunos no se les debería permitir beber. Well, senor, the hanging will be started soon. Well, let's not dilly-dally. Yes, sir. We go. Dicen que Perón tiene algunas chicas súper en la enfermería del cáncer. चलो मुझे बहुत चुपके से काम करना होगा आई थिंक स्टीव वन के जो शुगर थी लोगों ने चुराई है शायद तो मुझे बहुत नीचे जाओ वो बहुत भाग रहे यार This way. This way. तो वो कहाँ तो ये लोग कहाँ पर भाग रहे हैं मुझे भी पता नहीं अब मुझे इनकी बातें सुनना है तो अब ये क्या बोलते हैं चलो वो औरतें बहुत अच्छी है मेरे लिए तो Pareces tenso. Deja que te ayude a relajarte. आई थिंक मुझे ऊपर जाना ही हुआ क्योंकि ये लोग दोनों मुझे देख रहे हैं Las cortinas, ¿por qué no compras las cosas? कहाँ पर जगह चलो ऊपर जाते हैं ऊपर गार्ड्स भी नहीं है तो How long will this hanging take, man? I don't mean to hang about all day for the captain. Quick as anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. I don't want the alleys, mind. I want goods. Things I can sell. Tobacco, rum, sugar. See. We have much fine sugar. Crates we took off a fat Englishman last night. हाँ पता चल गया ये शुगर ही नहीं Englishman. Por el delito de botín contra tu capitán. Sí. El tribunal te Sugar from sentencia a Bardal. morir en la Very horca. fine. We hold it in the Castillo after the man started the fight last night. He ran, left his sugar behind. Very fine. That's a start. Shall I accompany him to the Castillo? No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good lord. Is that big brute your Captain Mendoza? No, sir. He is el tiburón. El tiburón, Governor Torres' man. Nadie tiene noticias suyas. He visto tipos duros en mis tiempos. टेल कैप्टन हो भाई कैप्टन मुझे कैप्टन के पीछे जाना चलो Yo iba al mío, de repente... ¡Ah! ¡Vieron de lleno!
मुझे कैप्टन कहाँ पर जा रहा है मुझे पता नहीं। चलो मुझे इन लोगों को हायर करना होगा। आओ भाई आ जाओ। तो ये अच्छा चाबी इस कैप्टन के पास है, तो मुझे उसको स्टील करना होगा। चलो इस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करते। चलो इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट। Work your magic. ¿Acaso no me has oído? हो भाई इधर दो गार्ड्स खड़े तो गार्ड्स कैप्टन निकल रहा है। मुझे ये बटन दबा के इसके चलो मेरे तो चाबी चुरा ली। अब मुझे उधर जाना होगा। इधर से जाते चाबी चुरा ली तो अब मुझे उधर जाना होगा। चलो इधर जाते। कोई देख रहा है ओ देख मुझे ऊपर जाना होगा। नहीं 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 चलो इधर ऊपर जाओ। मुझे बहुत चुपके से उधर जाना है। इधर एक एनिमी तो मुझे इसको भी मारना होगा। Algunos no se les... ¡Alto! अच्छा चलो तेरे जो काम तमाम कर जाए इसका नंबर है। चलो हम तो पहुंच गए। यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। ये तो चीज़ उधर भी थी पहली पार्ट में जो मैंने एक एसेसिन को मार दिया। मुझे पानी में घुसना है। मुझे उधर अपने दोस्त के पास जाना होगा। मीट स्टीव आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ। चलो चलते हैं उसके पास। तो उधर खड़ा है तो चलो चलते हैं उसके पास।
Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. अपना सच नाम भी बता दिया. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. ये मिशन तो कंप्लीट हो गया. तो हम अभी तक क्या है गवर्नर से अभी तक मुझे हम मिले नहीं. तो चलो मेन मिशन की तरफ जाते हैं. चलो कहाँ पर है. चलो मैप पे देखते हैं. हाँ वो इधर है. मुझे उधर जाना ही होगा. चलो चलते हैं. इस गेम में एक नुकसान ये है कि भाई इसमें हॉर्स नहीं है, ताकि हमारा जो है ना जो मैप में हम चलते हैं ये थोड़ा पास हो जाए. नहीं है इसमें. ओ भाई ये क्या है. तो इसके अभी तो कुछ नहीं होता. ठीक है, अच्छी बात है. कर लेंगे कभी. अभी मुझे मेन मिशन करना चाहिए. ओ भाई आई थिंक ये गवर्नर का घर है. तो चलो चलते देखिए क्या होता है. So, Mr. Walton, I presume. Yeah, Mr. Walton का घर है. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Duncan नाम देखकर तो मुझे एंट्री देगी. चलो मुझे कहाँ पर जाना होगा. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. अब हमारा ड्यूटी हो रहा है वार्डन के साथ. आई थिंक ये इस दोनों में कोई होगा. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah.
Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. You've got my 2 best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like, get a feel for it. I once fought beside a man who carried 9 on his person. They were a boom in battle, but hindered his ability to swim, sadly. Quite. I still kick, yes? I long for the day where one firearm carries 4 bullets, and not the opposite. I have a friend in England you may like to meet, Julien. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique! थोड़ा पीछे आओ यार. Talk to them. All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. इधर मार. चलो ये Rotten luck, eh? चलो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं. कंटिन्यू करते हैं चैलेंज. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged sadly beyond all repair. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. Is a souvenir. तो चलो ये इसने तो ढूंढ नहीं है किससे किया है. चलो मुझे इन लोगों 2 को फॉलो करना. blades, as is the custom, eh? Custom, aye. विलियन. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Well, You must. We put together a training course in anticipation of your arrival. We'll be ashamed to leave here without seeing you in action. yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly show you what I know. Here. You see, situations well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. तो परफॉर्म असैसिनेशन तो मुझे इन लोगों को मारना ही होगा असैसिन करके. Show us another technique. Quite ingenious to use bales of hay for cover, don't you think? अब मुझे ये मुझे टेक्निक बता रहे थे. God, that's the spirit. Secrecy. The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. Move between the two civilian to blind them. God blind me, that's a clever trick. चलो Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? Magnifique. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed?
चलो Mon Dieu, such a powerful strike. ठीक है अब और कौन से Fascinating. चलो अपने हाउस को फॉलो कर दें Continue. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados, anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England penniless, but free men, or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. चलो इतना तो पता चल गया कि ये लोग जो है ना वेलेंस है Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. अच्छा ये चीज है Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. ये सारे जो है ना मेन विलन्स हैं यहाँ की क्योंकि ये डनकन जो है ना ये अपने असैसिन्स फैमिली को जो है ना धोखा दिया लेकिन उसने तो एडवर्ड ने मार दिया वो खुद एक डनकन Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislatures of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide our wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cooled. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look up. एक मेन मिशन क्या है मेन मिशन प्रोग्रेस ट्रैकर पता नहीं क्या है लेकिन चलो And commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that will grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon.
For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. मिशन कंप्लीट हो गया। तो इस चीज़ की बात की जो हमने ट्रायंगल इसको दे दी, वो एक सीक्रेट चीज़ है। Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. चलो, इसे हम कल मिलेंगे, कल सुबह। Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. चलो हम उसे कल मिलेंगे, कल सुबह। तो Pirates! Pirates! Run! लूट कर लो। ओ भाई, भाई ये मैंने क्या किया? चलो Un blanco claro. मारना। नहीं। Intentas dejarnos atrás, cruzador. भाई आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड में। गाइस अगर आप यहाँ तक फिर वीडियो देख रहे तो बहुत शुक्रिया आपका, और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। कमेंट बताओ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई गलतियाँ दिख रही तो बता देना। फ्यूचर में इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।